नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. करिअर मार्गदर्शनाबाबत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची जागरूकता. श्री सरस्वती शिशु मंदिर माजी विद्यार्थ्यांद्वारे व्यवस्थापित. जामणी गावात आग लागून एक घर जळून खाक झाले व बंधनकारक नियोक्ता आणि कुटुंबातील सदस्य. तेलंगणा काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागली व हस्तक पार्टी 17 पैकी 14 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य. एक रसाळांची कसोटी, दुसऱ्या डावात इंग्लंडचा डाव 145 धावात आटोपला. तेलंगणा मीडिया अकादमीच्या अध्यक्षपदी के श्रीनिवास रेड्डी. तेलंगणा राज्य सरकारने आदेश जारी. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी भद्राद्री श्री सीतारामचंद्र स्वामींचे दर्शन. मंदिर प्रशासनाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांचे जंगी स्वागत. एमएलसी कविता यांचे सीबीआयला पत्र. उद्याच्या सुनावणीला ते उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आधीच लोकांची मने जिंकली आहे. तर केएसआर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले. शेकडो लोक आपली भूक भागवत आहे, तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे. त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత. కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు. పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు. పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న. ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న. గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. श्री सरस्वती शिशु मंदिराचे माजी विद्यार्थी औला महेंद्र एनराला नागेश नागराज यांनी सांगितले की ते समाजाच्या हितासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. ते आपली मोठी जबाबदारी पार पाडत आहे आणि मदत व सहकार्य करत आहे. श्री सरस्वती शिशु मंदिर 1992 ते 93 माजी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली महालक्ष्मीवाडा शासकीय उच्च महाविद्यालय आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शनावर जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. प्रत्येकाला चांगला अभ्यास करून चांगल्या स्तरावर जाण्याची इच्छा त्यांनी दाखवली. तर 2015 पासून सर्व माजी विद्यार्थी समाज चांगले असेल तर सर्वांचे भले होईल या उद्देशाने सर्व माजी विद्यार्थी एकत्र येऊन अनेक सेवा कार्यक्रम व जनजागृती परिषद आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा पॅडचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात माजी विद्यार्थी महेंद्र, दयाकर, किरण कुमार, जयपाल रेड्डी, राकेश रेड्डी आदींनी सहभाग घेतला. दिनेश सर
బ్యాలెన్స్ వస్తుంది 1992 ఆ మిత్రబృందము 1960 అంటే దాదాపు రివిజన్ చేయరు. రివిజన్ చేయకపోతారు కాబట్టి అక్కడ గుర్తురాదు. 1992-93 10వ తరగతి బ్యాచ్ శిశు మందిర్ ఆదిలాబాద్ బ్యాచ్ నుంచి మేము ప్రతి సంవత్సరము రకరకాల కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. సమాజ హితం కొరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే 10వ తరగతి పిల్లలకు పరీక్షలపై అవగాహన మరియు 10వ తరగతి తర్వాత ఏమేమి కోర్సులు చేయాలి, ఏది చదివితే ఏ ప్రొఫెషన్కు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో మేము గత 2015 నుంచి ఈ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈసారి మా లక్ష్మీవాడ ఈ మాస్ ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు పేద పిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కొరకు కూడా సబ్జెక్టు నిష్ణాతులతో నిపుణులతోని అదేవిధంగా కెరీర్ గైడెన్స్ ఆఫ్టర్ 10th ఏమేం చేయాలా అన్న దాని మీద స్పష్టత కొరకు ఒక 2 నుంచి 3 గంటల సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చాలామంది పిల్లలు 80 నుంచి 90 మంది పిల్లలు హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ వినాయక నిమజ్జనం నాడు వచ్చే భక్తులకు పులిహోర పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. కేలాపూర్ పాదయాత్ర భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఈ హైవే ఉన్న పోయేటోళ్ళందరి భక్తుల కొరకు జ్యూస్ పంపిణీ, వారి అంటే శక్తి నడవడానికి శక్తి కావాలి కాబట్టి జ్యూస్ పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది. अदेविधंगा ई कार्यक्रम रेग्युलर చేయడం జరుగుతుంది. अचानक आग लागून घर जळून खाक झाले. सोन्याचे दागिने, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रांसह सुमारे 22 लाखाची रोकड जळून खाक झाली. सुमारे 5 लाखांचे नुकसान झाले. ही घटना तामसी मंडळातील जामनी गावात शनिवारी रात्री घडली. गावातील नागराडे बुद्धप्रकाश हा उपजीविकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेत गेला होता आणि तेथील मेल्ट नावाच्या कंपनीत कामाला होता. या दरम्यान ते आपल्या घरी परतताना घरातील सदस्यांसोबत नेहमीच जेवण करून सर्वजण झोपी गेले. आग भडकून ही संपूर्ण घरात पसरली आणि घरातील टीव्ही, बेड, फर्निचर आदी हे 22,000ची रोकड, सोने, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, गॅस बुक, ATM कार्ड व वाढदिवसाचे दाखले हे सर्व जळून खाक झाले. बुद्धप्रकाश आणि त्यांच्या कुटुंबांनी बाहेर धाव घेतली आणि त्यांचा जीव वाचला. या अपघातात सुमारे 5 लाखाचे नुकसान झाल्याची तक्रार पीडितांनी केली आहे. घर गमावलेल्या आणि रस्त्यावर अडकलेल्या पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारने सर्वतोपरी मदत करावी अशी गावकऱ्यांची इच्छा आहे. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घ्यावा असे खासदार सोयम बापूराव व आमदार पायल शंकर यांनी सांगितले. दोघांनी मिळून आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील स्थानिक आमदाराच्या शिबिर कार्यालयात पंतप्रधान उज्ज्वला योजना या योजनेतून शहरातील KRK कॉलनीत रहिवाशींना गॅस सिलेंडर आणि स्टोव्हचे मोफत वाटप केले. खासदार सोयम बापूराव म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्व बहिणी आणि बांधव निरोगी राहावे या उद्देशाने उज्ज्वला योजना चालू केली आहे. तर या योजनेअंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शनचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पात्र गरीब व सर्वांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले. या कार्यक्रमात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, भाजप नेते, कार्यकर्ते आदी सहभागी झाले होते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कम से कम 20 से 25 के कॉलोनी में भाई 2 मशीना लगा के खराब पूरे हो जाएगी तो फिर नहीं होगा. उज्ज्वला నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా చిన్నప్పుడు ఏదైతే తన తల్లి కష్టపడ్డదు, కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేసి ఆమె పిల్లలకు అన్నం పెడుతున్నప్పుడు ఆమె కంటి నిండా ఎట్లా కళ్ళకు నీళ్లు గారుతుండే, ఆమె ఆరోగ్యం ఎట్లా చెడిపోయింది, ఈ విషయం అంతా కూడా వచ్చినట్టు ఎన్నో మీటింగ్లలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ యొక్క గ్యాస్ సిలిండర్ లేకపోతే ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడిన మాటలు మీరు టీవీలలో విన్నారు. దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా మహిళలు పడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క చిన్న కష్టాన్ని माजी मंत्री जोगू रामण्णा म्हणाले की काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांची उपेक्षा सहन करणार नाही. ते म्हणाले की तेलंगणात काँग्रेसची सत्ता येऊन 3 महिने उलटले असले तरीही शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यात हे पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आदिलाबाद शहरातील BRS जिल्हा पक्ष कार्यालयात त्यांनी शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या
अन्यायाचा उल्लेख करताना राज्य सरकारवर टीका केली। ते म्हणाले की सत्तेत नसताना काँग्रेसचे नेते शेतकऱ्यांच्या बाजूने खूप बोलायचे। पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त भेट म्हणून शेतकऱ्यांचे 2 लाखांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रेस सरकारने 2 महिन्यापासून अधिक काळ असे केले नाही। तर आदिलाबाद जिल्ह्यात 64,124 लाख शेतकऱ्यांना रैत बंधू अंतर्गत 286 कोटींची गरज आहे। मात्र आतापर्यंत 94,741 लोकांना केवळ 97 कोटी व 16,000 रुपये देण्यात आले आहे। शेतकऱ्यांच्या हाती चणे आणि कांदी पोहोचली असून त्यांनी तातडीने खरेदी करावी अशी मागणी त्यांनी केली। आठवडाभरात केंद्र सुरू न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రైతుల విషయంలో 100% విఫలమైంది। ఈ రోజు మీరు అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు, మీరు అధికారంలోకి వచ్చి రైతుల్ని పూర్తిగా దగా చేస్తా ఉన్నారు, మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా। మీరు చెప్పింది ఏంది? మీరు సోనియా గాంధీ బర్త్డే సందర్భంగా బర్త్డే కానుకగా 2 లక్షల రుణం మాఫీ చేస్తామన్న మాట వాస్తవం కాదా? ఎందుకు ఈ రోజు వరకు అది జరుగుతలేదు? దాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం। ఇలా రైతు బంధు డిసెంబర్ 11వ తారీఖు నాడు మొదలైంది। ఇలా మరి ఇలా ఫిబ్రవరి 25వ తారీఖు అంటే దాదాపు 2.5 మాసాలైంది। 2.5 మాసాల్లో మీరు ఇప్పటి వరకు వేసిన రైతులకు ఎందరు రైతులకు ఎంతమంది దెబ్బేసిందో చెప్తున్నా నేను। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైతులు 1,64,124 మంది రైతులు, దానికి కావాల్సింది 286 కోట్లు ఒక కిస్తు మాత్రమే। మేము చెప్పిన प्रसिद्ध जादूगार मारुती जोशी आणि रामकृष्ण सहसोपेते यात्रेचा शुभारंभ हिंदूचे 500 वर्षाचे स्वप्न अयोध्येत पूर्ण झाल्यानंतर प्रख्यात वैदिक विद्वानाच्या वैदिक मंत्र उच्चारांनी संपन्न झाला। देशात प्रथमच ते नाविन्यपूर्ण आध्यात्मिक जादू करत असून त्यांची प्रशंसा होत आहे। या महिन्याच्या 23 तारखेला हैदराबाद येथील दिव्यासाखेत येऊन डोळ्यावर पट्टी बांधून मोटरसायकलवरून निघाली ही यात्रा आज सकाळी आदिलाबाद येथे पोहोचली। खासदार स्वयं बापूराव आणि मठाधिपती योगानंदी सरस्वती यांनी शहरातील रामचंद्र गोपालकृष्ण मठात यात्रेकरूंचे स्वागत केले। बाईकचे पूजन करून शाल श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मान करण्यात आला। तर सुमारे 1600 किलोमीटरचा हा साहसी प्रवास सुरू करण्यात असल्याचे यात्रेकरू मारुती जोशी आणि रामकृष्ण यांनी सांगितले। आरमूर आदिलाबाद रेल्वे लाईन साधना कमिटीचे उद्घाटन सुरू आहे। साधना समितीच्या विद्यमानाने जिल्हा केंद्रातील R&B गेस्ट हाऊस मध्ये राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमाला रविवारी 40वा दिवस आला। तर अनेकांनी दीक्षा शिबिराला भेट देऊन एकता व्यक्त केली। रिलेच्या उपोषणाचा एक भाग म्हणून त्यांनी अर्धनग्न निदर्शने करून अभिनव पद्धतीने आपला निषेध व्यक्त केला। तर रेल्वे मार्ग मिळेपर्यंत आम्ही लढा देऊ आणि गरज पडल्यास आंदोलन तीव्र करू असा खुलासा साधना समितीचे जिल्हाध्यक्ष सिर्रा देवेंदर यांनी केले। चालू करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आमदार पायल शंकर म्हणाले की महापुरुष हे आपल्यात नसले तरीही आपल्या विचारांनी ते सदैव आपल्या सोबत आहे। स्थानिक चिलकुरी लक्ष्मीनगर येथे श्री संत रविदास जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली व हा दिन सोहळा प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होऊन त्यात पुतळा बसवला। तर आमदार पायल शंकर म्हणाले की दुर्बल घटकातील व्यक्ती आपल्या विचारातून समाजाला चालना देऊ शकते आणि आपल्या शब्दातून सामाजिक भान आणू शकते, ही मोठी गोष्ट आहे। तर अशा महापुरुषांची संत रविदास म्हणून स्तुती केली जाते। ते म्हणाले की तंत्रज्ञानाच्या या दिवसात एक गोष्ट जाणून घेणे आणि एक गोष्ट 4 लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे सामान्य झाले आहे, पण पूर्वीच्या काळी रविदासांसारख्या महापुरुषांना लोकांना जागृत करण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागले। पण ते तेवढेच नव्हे तर त्यांचे प्रयत्नही वाया गेले नाही। आज अनेकांना शिक्षण आणि अध्यात्मनातून मार्गदर्शन केले जात आहे असे सांगितले।
काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्यांच्या KSR फाउंडेशनच्या अंतर्गत अनेक सेवा कार्यक्रम राबवत आहे आणि लोकांची प्रशंसाही मिळवत आहे। संकटात सापडलेल्या लोकांना वेळेवर रुग्णालयात नेण्यासाठी फाउंडेशनच्या वतीने मोफत जीवनरक्षक रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली। तर बेला मंडळातील सांगडी गावातील शेतकरी संतोष रेड्डी यांच्या पायावर मलपट्टी झाल्याने आदिलाबाद रुग्णालयात उपचार सुरू आहे, तर त्यांना रुग्णवाहिकेतून त्यांच्या गावी सांगडी येथे नेण्यात आले। व तलामाडगू मंडळातील भरमपूर गावातील आणखी एक शेतकरी रमणा यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ झाल्यामुळे आणि त्यांना आदिलाबाद येथून जीवनरक्षक रुग्णवाहिकेतून निजामाबादच्या रुग्णालयात उत्तम वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यात आले। तर त्याच दरम्यान जैनत मंडळाच्या दीपाईगुडा गाव येथील एकिकाला किडनीचा त्रास असून तिच्यावर शहरातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। तिला डिस्चार्ज दिल्यानंतर तिला ॲम्ब्युलन्समधून तिच्या मूळ गावी दीपाईगुडा येथे नेण्यात आले। यासाठी फाउंडेशनचे अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास रेड्डी व त्यांचे कर्मचारी पीडितांनी यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले आणि असे चांगले कार्यक्रम हाती घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले। महिला दिनाचे औचित्य साधून आर्यवैश्य महिला मंडळाच्या वतीने महिला व युवतींसाठी विविध क्रीडा स्पर्धा घेण्यात आल्या। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील विनायक चौक श्री सरस्वती शिशु मंदिर शाळेच्या प्रांगणात झालेल्या या स्पर्धांमध्ये महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला। कॅरम, बुद्धिबळ, खो खो, जिलेबी या खेळात त्यांनी आपले कौशल्य दाखवले। 200हून अधिक महिलांनी व त्यांनी इनडोर आणि आउटडोर गेम्समध्येही सहभाग घेतल्याने शाळेचा परिसर दणदणून गेला। मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेले संपूर्ण परिसरात जल्लोषाचे वातावरण होते। श्री वासवी कन्या परमेश्वरी माता मंदिरात महिला दिनी विजेत्यांना बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले। జై వాసవి ఆర్యవైశ్య వాసవి మహిళా మండలి ఆధ్వర్యంలో ఉమెన్స్ డే ప్రోగ్రామ్స్ ఆ రోజు శివరాత్రి ఉంది కాబట్టి మేము ఈ రోజు సండే వినాయక్ శిశు మందిర్ స్కూల్లో ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇందులో 200 మంది మహిళలు పాల్గొంటున్నారు। ఖోఖో, లగోరి, లెమన్ స్పూన్, జిలేబీ గేమ్, చెస్, క్యారమ్ 50 అబోవ్ వాళ్ళ కోసం వేరే పెట్టాము, 50 బిలో వాళ్ళ కోసం కూడా పెట్టాము। ఈ ఆడిన గేమ్స్ది విన్నర్స్ని 6th రోజు గేమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి గుడిలో వాసవి महिला मंडळ आध्वर्యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। आमदार पायलशंकर म्हणाले की आधुनिक युगातही आदिवासींनी आपली संस्कृती आणि परंपरा जपल्या पाहिजे आणि त्या भावी पिढ्यापर्यंत पोहोचवाव्यात। हिरासुका जागृती समितीच्या वतीने रविवारी झालेल्या गोंडी धर्मगुरू हिरासुका यांची जयंती सोहळा ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते। स्थानिक RTC बसस्थानकासमोर हिरासुकाच्या मूर्तीचे पूजन केले। आदिवासींच्या संस्कृतीनुसार पूजन करून ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले। त्यानंतर रणजी गोंड व कोमरम भीम यांच्या मूर्तींना पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। आमदार पायलशंकर म्हणाले की देशात आदिवासी संस्कृती आणि परंपरा खूप समृद्ध आहे, ते भावी पिढ्यांना देण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याचा सल्ला दिला। हिरासुका जयंती अधिकृतपणे आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारला पावले उचलण्यास सांगण्यात आले। या कार्यक्रमात हिरासुका जागृती समितीचे नेते सिद्धाम रामकिशन, मेसराम कृष्णा, गेडाम जनार्दन, गेडाम मनोहर, आदिवासी प्रधान सेवा संघाच्या अध्यक्षा दुर्वा नागेश, भाजप नेते आदी उपस्थित होते।
10 కోట్ల ఆదివాసీ గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి హీరాసుక్క జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు చేసిన సందర్భంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులందరూ కూడా హీరాసుక్క జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ ఆదివాసీలంతా కూడా ఏ జాతి మర్చిపోయినా ఈ అధునాతన సమాజంలో ఆధునిక సాంకేతిక గొప్పలు ఎన్ని వచ్చినా ఈ యొక్క ఆదివాసీ సమాజంలో మాత్రం ఒక ప్రత్యేకత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాల్ని కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతిని కానీ कापाडवलो ముందున్నటువంటి సమాజం ఏదైనా ఉన్నది ఈ దేశంలో అంటే ఆదివాसी समाज। GOMS 60 नुसार कॉन्ट्रॅक्ट दराने घेतलेल्या करारानुसार कामगारांना मजुरी न दिल्यास पुढील महिन्यात 6 मार्च पर्यंत EPF ESI संपावर जाईल असा इशारा AITUC जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर यांनी दिले। तर तेलंगणा मेडिकल कॉन्ट्रॅक्ट अँड एम्प्लॉईज युनियनचे जिल्हाध्यक्ष डोंगरे चंदू व कार्याध्यक्ष MD मुजीब यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा केंद्रातील रिम्स रुग्णालयात आपत्कालीन विभागात जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला। तर चौथ्या दिवशीही त्यांनी निदर्शने करून घोषणाबाजी केली। रिम्स आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या स्वच्छता सुरक्षा रक्षक आणि पेशंट केअर कर्मचाऱ्यांना GOMS 60 नुसार 12,000 मानधन दिले जात असताना त्यांना केवळ 11,000 मानधन दिले जात असल्याचा आरोप सिर्रा देवेंदर यांनी केला। నాలుగో రోజు గంటసేపు నిరసన కొనసాగుతా ఉన్నది। ఈ నిరసన ముఖ్య ఉద్దేశం సంబంధిత కృష్ణా కన్స్ట్రక్షన్ ఏజెన్సీ యజమాని అగ్రిమెంట్ ప్రకారం DME సర్కులర్ ప్రకారం GO 60 ప్రకారం ఏదైతే 15,600 వేతనం ఇవ్వాల్సి ఉన్నదో అందులో భాగంగా మెయింటెనెన్స్ పేరు మీద 1,000 రూపాయలు దోచుకొని ఇలా 11,000 రూపాయలు ఏదో పుణ్యంకు ఇస్తున్నట్టు కార్మికుల అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। PF 3,023 రూపాయలు కట్టాల్సి ఉండగా ఇలా 1,500 1,400 800 మొత్తం 1,600 లోపు కడితే మిగతా 1,800 రూపాయలు PF పేరులో ఉన్నటువంటి ఇలా ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్లో కూడా దోచుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది। ESI 484 రూపాయలు కట్టాల్సి ఉండగా बेला मंडळातील मसाला B गावात मंडळ ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय गुंडावार यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांच्या हस्ते 3 लाख रुपयांची सीसी रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले। मंडळातील सुमारे 2 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का आणि आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे विशेष आभार मानले। आगामी काळात गावांच्या विकासासाठी काँग्रेस पक्ष आणखी अनेक लोककल्याणकारी कार्यक्रम घेईल असा आश्वासन त्यांनी दिले। तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मंडळाला अधिक निधी दिला जाईल आणि विकासाचे कार्यक्रम हाती घेतले जाईल असे ते म्हणाले। या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाचे बाजार समितीचे माजी सभापती वामन वानखेडे, मंडळाचे माजी ZPTC रामदास नाकले, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रमेश पाटील, ईश्वर दोटे, काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते शंकर सागर आदी सहभागी झाले होते। జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద బేల మండలంలో 2 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। దాని సందర్భంగా మసాలా బి గ్రామంలో 3 లక్షల తోని सीसी रोड निर्माणం చేయని దానికోసం ఈ రోజు శుభారంభ పని చేసినాం। మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వామన్ వాన్ఖేడే, ఇక్కడ ఉన్న రమేష్ భూబన్ గారు, అట్లానే ఈశ్వర్ దోటే గారు, అట్లానే మోబిన్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ శుభారంభం చేసినాం। ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి సీతక్క ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క ఫండ్ అక్కడ నుంచి మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 3 లక్షల పని ఇవ్వడం జరిగింది। बेला मंडळातील सोनखास गावातील गरीब कुटुंबातील 55 वर्षीय आडे राजाराम हाताची वाट पाहत आहे। तर गेल्या 2 वर्षापासून ते किडनीच्या समस्येने त्रस्त होते। मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे ते मरण पावले आणि कुटुंबाचा संपूर्ण भार त्यांच्या पत्नीवर पडला। तिलाही सध्या पतीच्या सेवेपुरतेच मर्यादित राहावे लागते। तर पतीला आठवड्यापासून 3 दिवस व डायलिसिससाठी रिम्स हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावे लागत असल्याने हातात पैसे नसल्याने ते चिंतेत आहे।
पूर्वी गावकरी काही पैसा जमा करून दान करायचे, अशा परिस्थितीत देणगीदारांनी पुढे येऊन सहकार्य करावे अशी विनंती ते करत आहे। आम्ही सोनकास गाव राजेराम आदे यांनी बीमार आहे, किडनी प्रॉब्लेम आहे, तरी मला जरूरत पडली पैशाची, माझ्याशी तर होत नाही। आता मी मजुरी नाही, हजुरी नाही, काही नाही, त्याच्या मागं फिरत आहो। मला मदत करा। 50-40 हजार का 70 हजाराची जरूरत आहे म्हणून सांगले डॉक्टर। तुम्ही मदत केले तर बा तुमचे आभारी मानतो मी। 6 महिने झाले आम्ही रिम्सले जात आहोत, वारातून 3 डावचं ड्रायलेशन होत आहे, मयाशीन होत आहे नाही। डॉक्टर म्हणले का तुम्ही ह्या माणसाले हे पिस्टूला टाकून दिलं तर मशीन टाकलं शातील तर वाचते, नाही तर नाही वाचत म्हणले। आता मी कशी करू? तुम्ही मदत केले तर भलं होते, तुमचे आभारी मानतो। करून आम्हाला मदत करा। काम करणं होत आहे ना, यायच्याच मागं फिरत आहो। 9-10 महिने झाले, 5 पैशाची मजुरी नाही, मी कशी करू? मी कशी वाचव त्याले? त्याच्या मागं जाणं मला मजुरीच नाही करता येत आहे। आता तरी गव्हर्नमेंटनं तरी सहकार्य करावं, आम्हाला मदत करावं, तुमची विनंती करतो, तुमचे आभार मानतो। तेलंगणा काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत आहे। तेलंगणातील 17 पैकी 14 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे। उमेदवारांची निवड आधीच सुरू आहे। सीएम रेवंत रेड्डी यांनी यापूर्वीच व चल्लावामसी चंद रेड्डी महबूबनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे। मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच भूमीवरून केलेल्या या वक्तव्याने काँग्रेस नेत्यांच्या गटात खळबळ उडाली आहे। लोकसभेच्या तिकिटाच्या आशेवर असलेल्यांकडून आधीच अर्ज असलेले काँग्रेसने व त्यानंतरची सर्व प्रक्रिया बाजूला ठेवून पहिले उमेदवार जाहीर केले, तर सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर त्यांनी नेतृत्वापासून पूर्ण स्वातंत्र्य घेतले आणि उमेदवारांची घोषणा केली। उमेदवारांच्या ताज्या यादीत काही नावे ठळक आहे। रांची येथील 4थ्या टेस्टच्या दुसऱ्या डावात इंग्लंडचा डाव हा गुंडाळला गेला। या सामन्यात पहिल्या डावात जोरदार धावा करणारे इंग्लंडचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजाच्या पलीकडे झटपटबाज झाले, तर तिसऱ्या दिवशी 7 विकेट्सवर फलंदाजी करताना ध्रुवच्या एका हाती झुंजीच्या जोरावर भारताचा डाव 103 षटकात व 307 धावांवर आटोपला। ध्रुवने 90 धावा पूर्ण केल्यास तर कुलदीप यादवने 28 धावा करत असता सर्वोत्तम कामगिरी केली। दुसऱ्या डावाला सुरुवात केल्यानंतर इंग्लंडचा संघ 145 धावांवर दारदला झाला। तेलंगणात नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकारने नामनिर्देशित पदे भरण्यास सुरुवात केली आहे। अलीकडे काही नामांकित पदावर कार्य करत असलेल्यांपैकी काहींना स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे, तर काहींना रेवंत रेड्डी सरकारने काढून टाकले आहे। या पार्श्वभूमीवर संबंधित रिक्त पदांना नवीन लोकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे। अलीकडेच तेलंगणा मीडिया अकादमीने ज्येष्ठ पत्रकार के श्रीनिवास रेड्डी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे। सरकारचे विशेष सचिव एम हनुमंतराव यांनी या नियुक्तीचा आदेश जारी केला आहे। या पदाला कॅबिनेट दर्जा असेल। के श्रीनिवास रेड्डी 2 वर्षासाठी तेलंगणा मीडिया अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करत राहतील, तर आतापर्यंत अल्लम नारायण हे तेलंगणा मीडिया अकादमीचे अध्यक्ष आहे। त्यांच्या जागी के श्रीनिवास रेड्डी पदभार स्वीकारतील। श्रीनिवास रेड्डी सध्या प्रजासत्ताक मासिकाचे संपादक आहे, तर त्यांनी यापूर्वी भारतीय पत्रकार संघाचे महासचिव आणि विसलंद्र मासिकाचे संपादन म्हणून काम केले आहे। छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी भद्राचलममध्ये श्री सीतारामचंद्र स्वामींचे दर्शन घेतले। आज स्वामींच्या दर्शनासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्याचे देवस्थानाचे ईओ आणि पुजाऱ्यांनी मेळाव्याच्या तालावर जोरदार स्वागत केले व नंतर
अंतरालयात विशेष पूजा करण्यात आली व पुरोहितांनी परमेश्वरांचे वेगळेपण सांगून तीर्थप्रसाद दिला व ईओ रमादेवी स्वामींचे रेशमी वस्त्र, श्री सीतारामचंद्र स्वामींचे स्मृतिचिन्ह हेही पाहण्यात आले। तर या कार्यक्रमात देवस्थानचे ईओ रमादेवी, ईओ श्रावण कुमार व भद्राचलम विभाग भाजपचे प्रतिनिधी आदी सहभागी झाले होते। मंगल दीपलेखां श्री रंगराज महर्षिं दर्शन बीआरएस एमएलसी कविता यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला पत्र लिहिले। पत्रात तिने दिल्ली दारू घोटाळ्या प्रकरणी उद्या होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहणार नसल्याचे नमूद केले आहे। निश्चित वेळापत्रकामुळे सुनावणीला उपस्थित राहता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले। त्या दरम्यान सीबीआयने एमएलसी कविता यांना दिल्ली दारू घोटाळ्या प्रकरणी चौकशीला उपस्थित राहण्याची नोटीस दिल्याची माहिती आहे व सीबीआयने त्यांना या महिन्याच्या 26 तारखेला त्यांच्या समोर हजर राहण्याचे आदेश दिले। या संदर्भात तिने उद्याच्या सुनावणीला हजर राहणार नसल्याचे पत्र लिहिले आहे। तर त्यामुळे कविता सीबीआयच्या तपासास हजर राहणार ही नाही या संभ्रमाला पूर्णविराम मिळाला आहे। तर कविता यांच्या पत्रावर सीबीआय काय निर्णय घेणार याबाबत सस्पेन्स आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। करिअर मार्गदर्शनाबाबत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची जागरूकता, श्री सरस्वती शिशु मंदिर माजी विद्यार्थ्यांद्वारे व्यवस्थापित। जामणी गावात आग लागून एक घर जळून खाक झाले व बंधनकारक नियोक्ता आणि कुटुंबातील सदस्य। तेलंगणा काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागली व हस्तक पार्टी 17 पैकी 14 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य। एक रसाळरांची कसोटी, दुसऱ्या डावात इंग्लंडचा डाव 145 धावात आटोपला। तेलंगणा मीडिया अकादमीच्या अध्यक्षपदी के श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगणा राज्य सरकारने आदेश जारी। छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी भद्राद्री श्री सीतारामचंद्र स्वामींचे दर्शन, मंदिर प्रशासनाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांचे जंगी स्वागत। एमएलसी कविता यांचे सीबीआयला पत्र, उद्याच्या सुनावणीला ते उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।